ये ऑन करना पड़ेगा। ये सर के आगे रख दो, इसमें ऑडियो वीडियो दोनों ऑफ कर दो। अच्छा, इसमें वीडियो ऑडियो ऑफ कर दो। सर्किट ये बंद करना, वो उधर कर दिया यार है इसमें इसको एडजस्ट करना। नमस्ते सर। स्टार्ट कर सर प्रणाम। योसु भगवान् अरहंतं समुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संगो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससंगं इमेहि सकारि हि यथार्हं आरोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ति भगवा सुचिर परिनिभूतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारि दुर्गतपणाकारभूति पठिगणातु अम्हाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो उपभागनं कारं करोमसि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। त्रिरत्न वंदना। हन्दमयं रतनतय प्रणाम गाथा यो जीव संवेग परिकीर्तन पाठं च भणामसि बुद्धो सुशुद्धो करुणा महन्नवो योचन्त शुद्ध भरण्यालोचनो वन्दामि बुद्धं अहम् आदरेण तं धम्मोपदीपो वियतस्य सद्गुणो यो मग्गपाकामतपेदभिन्नको लोकुत्तरो यो
च तदत्तदीपनो वन्दामि धम्मं अहम् आदरेण तं संघो सुखेता व्यतिखेत संयुतो यो दिट्ठ संतो सुगतानुबोधको लोलपहीनो हरियो सुमेधसो वन्दामि संगं अहम् आदरेण तं पुण्यं मया यम मम समुपद्रवा माहोन्तु कस्य प्रभावसिद्धया इह तथागतो लोके उपन्नो अरहं सम्मा सम्बुद्धो धम्मो च देशितो नियानिको उपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतपवेदितो मयन्तं धम्मं श्रुत्वा एवं जानामि जातिपि दुःखा जरापि दुःखा मरणमपि दुःखं शोक परिदेव दुःख दो मनस्य पायासापि दुःखा अप्येहि संपयोगो दुःखो प्येहि विप्रयोगो दुःखो यमपीच्छं न लभति तमपि दुःखं संकित्तेन पञ्चुपादान खन्दा दुःखा सेयतीदम् रूपुपादान खंदो वेदनोपादान खंदो संयोपादान खंदो संखारूपादान खंदो विज्ञानोपादान खंदो ये संपरिज्ञाय धर्मानुसो भगवा एवं बहुलं सावके विनेति एवं भागा च पनस्य भगवतो सावकेषु अनुशासनी बहुला पवत्तति रूपं अनित्यं वेदना अनित्या संज्ञा अनित्या संखारा अनित्या विज्ञानं अनित्यं रूपं अनत्ता वेदना अनत्ता संज्ञा अनत्ता संखारा अनत्ता विज्ञानं अनत्ता सब्बे संखारा अनित्या सब्बे धम्मा अनत्ताति ते मयं ऊतिनाम जातिया जरा मरणेन शोकेहि परिदेवेहि दुःखेहि दोमनस्येहि उपायासेहि दुःखोत्तीर्णा दुःखपरीता अप्येव नामिमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तक्रिया पह्यायेताति चिरपरिनिर्वृतमपि तं भगवन्तं शरणं गता धम्मं च संघं च तस्य भगवतो शासन यथा सती यथा बलं मनसि करोम अनुपटिपजाम सासानुपटिपत्ति इमस्य केवलस्य दुःखखण्डस्य अन्तक्रिया संवर्ततु। मेडिटेट ध्यान करते हैं 7:30 बजे तक। 7:30 बजे तक राजेश जी हमको थेरागाथा सुनाएंगे। लाइट बंद।
ये तो इसमें भी आ रहा है, जरूरत नहीं है। इस प्रेजेंटेशन में देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखने मैं इसमें देख लेता हूँ। कोई नहीं, ये वाला कैमरा इधर कर देते हैं। वो तो ये लगा हुआ ना इसमें तो। ठीक, इसको ऐसे लगाया ना, इधर आया। बच गया। कहाँ है? सर अभी ये जो किए हुए हैं पहले वो कवर कर लेते हैं, लास्ट के 2-3 हैं जो सिलेक्टेड, या फिर आप कहते तो फिर हम आगे चले जाते हैं उससे। लगता है अभी ज्यादा सिलेक्ट मिलेगा कि दो जो चीज जो हुए पड़े हैं एक बार वो कवर कर लेते हैं। अच्छा ठीक। हम थे थिंक शिवाली कवर करना। So I think we were here. One thing that I think we got feedback from Bhattaji was that you should select some verses which which are abhi jo current verses, and many of them are just exaltations. So we will, going forward, we will not do all the verses, but verses which have even Dhamma reflections rather than just exaltations. But we'll there are 3-4. We'll quickly cover them, and then we'll move to some selected verses. So 60 Sivali. What is 4 point something? This is verse 60 है 1 का. Sivali. थेरीगाथा पासवर्ड क्या है? किसका? So he was reborn in this Buddha age as the son of Suppavasa, the king's daughter. When his mother was not able to bring forth and lay 7 days in great suffering, she said to her husband, "Before I die, I'll give a gift." And she sent him to the master, saying, "Go tell of my state to the master and invite him. And what he says, mark well, and come and tell me." So, बुद्ध के समय में ये जो
राजा की बेटी जो थी सुप्पवासा के पुत्र थे, his mother was not able to bring forth, lay 7 days in great suffering. He was not able to bring forth means वो प्रवचन नहीं कर पा रही थी, पैदा नहीं हो पा रहा। अच्छा, ओके, so he was not able to, he was उनके जन्म में मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे मरने से पहले एक मैं गिफ्ट देना चाहूंगी, एंड शी सेंट हिम टू मास्टर। तो उन्होंने उनको पास बुद्ध के पास भेजा और कहा कि मेरी जो स्थिति है वो भगवान को बताइए और उनको इनवाइट करिए। He did her bidding, and the master said, "May Suppavasa, the daughter of the Koliya, be happy." तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो भगवान ने कहा कि जो सुप्पवासा होंगे, जो सुप्पवासा है, जो राजा की पुत्री है, वो उनका मंगल हो। May she be happy, healthy and give birth to a healthy child. तो उन्होंने और मंगल कामना करी उनके लिए। The Raja heard, saluted the exalted one and set out for the village. तो जब ये राजा को पता चला तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और गांव की तरफ चल पड़े। Even before he came, Suppavasa was delivered of a son. उनके आने से पहले ही सुप्पवासा ने बच्चे को जन्म दिया। The persons who had surrounded her with tearful faces went forth delighted to tell the Raja. जो लोग आसपास जो थे, जो उनके हाल देख के रो रहे थे, खुश हो गए और उन्होंने जाके राजा को बताया। He saw them coming and thought, that which he of the 10 powers told me had been fulfilled. तो जिन्होंने मुझे 10 शक्तियों के बारे में का ज्ञान दिया था वो फुलफिल हो गई हैं। And he went to the princess and told her what the master has pronounced. तो उन्होंने जाके प्रिंसेस को बोला और कहा कि भगवान ने क्या बोला उनके लिए, कैसे महत्ता दी थी उनको। Then she bade him show hospitality to the Buddha and the order for 7 days, and saying, the child is born, bringing gladness of the heart to all the kin. They named him Sivali. Sivali का जो है वो उसका अर्थ है शुभ है, तो उन्होंने उनका पुत्र का नाम शुभ रख दिया, सिवली। By the 7th day from his birth, he was not able to do anything. He was able to do anything. अच्छा, he was able to do anything. तो अपने जन्म के 7 दिन तक वो जो चाहे वो कर लेते थे। सारिपुत्ता, general of the norm, conversed with him on that day and said, so पहले शुरू में ही पहले आदेश में बोलने से ना सोता बनना, देखो तो story is fantastic. The general of the norm, he had enormous merits of past life, so then at least the story पढ़ो, very fantastic. Sariputta, the general of the norm, conversed with him on that day and said, does it not behoove one who has overcome with suffering as you have done to leave the world? Sir, babbled the infant, I would leave the world. तो सारिपुत्ता जो थे उन्होंने उनसे उनके जन्म में ही बात की, जिन्होंने कहा कि क्या ये शोभा नहीं देता कि आप जैसे जिन्होंने सारी सफरिंग को ओवरकम कर लिया है, उससे ऊपर उठ गए हैं, वो इस संसार को छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो बहुत ही कुछ ही दिनों का बच्चा था, उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं संसार को त्याग देता हूँ। तो बच्चे ने कहा त्याग देता हूँ। हाँ, जब वो बोला कैसे सुन लो बस, त्याग देता हूँ बच्चा। वो उसकी पुराने जन्म की पारमियां ऐसी हैं, वो अभी सुनो तो, अभी तो कहानी सुनो, अभी तो
You'll be astounded कि क्या हो रहा है। कुछ ही दिन का बच्चा है, अभी तो पहले 7 दिन की बात हो रही है। उसकी माँ से परमिशन ली और उसको प्रवचन लेने के लिए। ऑर्डेन कर दिया सारे पुत्र ने। हाँ। लिखा हुआ Suppavasa saw them talking and asked the Thera what he has said. सुपवासा जो उनकी माता है, उन्होंने उनको बात करते हुए देखा और उन्होंने पूछा कि हिंदी कर दो ना, डायरेक्ट अंग्रेजी क्यों पढ़ते? अच्छा खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है। तो मुझे तो पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल जाऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कितनी उन्होंने पुरानी जो थी दुख झेले हुए हैं। we spoke of the long suffering he had overcome. With your leave I will ordain him. With your leave I will ordain him. तुम्हारी परमिशन अगर उसको देना, अंग्रेजी ऐसी है ना। हाँ, अगर आप परमिशन दे दोगे तो हम उसको उस बच्चे को 7 दिन के बच्चे को तो अपने ऑर्डर में ले लेंगे। हाँ, मॉन्क बना देंगे। She replied, "It is well, sir. Ordain him." तो माता ने कहा ठीक है, आप इसको ऑर्डेन कर सकते हैं। And Sariputta ordaining him said, "Civilly, you want no other exhortation than the cause of the long suffering you have overcome." तुम्हें और कोई exhortation का मतलब नहीं, कोई शिक्षा नहीं। अच्छा, कोई और शिक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने जितनी सफरिंग अभी तक सही है वही तुम्हारी शिक्षा है। Think of that, उसी को सोचो। Sir, replied the child. उन्होंने कहा जैसा आप कहें। Yours was the burden of ordaining me, but I'll find out what I'm capable of doing. आपका काम था कि आप मुझे ऑर्डेन करना, अब मैं ढूंढ लूंगा कि मैं क्या करना है मुझे। At that time, when the first lock of his hair was cut off, he was established in the fruition of the first path. तो जैसे ही उनके पहले बाल काटे गए, मुंडन किया गया, तो वो सोतापन्ना हो गया। When the second was cut in that of the second path, and so was the third and the fourth. तो जैसे उनके दूसरा स्ट्रोक चलाया गया, तो उनका नेक्स्ट स्टेज और थर्ड, सिमिलरली fourth पे next stage. Other teachers say that after Sariputta had ordained him, he went the same day and taking up his abode in a secluded hut. सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बच्चा जाएगा कैसे? और कुछ ही जा रहा है। तो बाकी कहीं कमेंट्रीज और टीचर्स ने कहा है कि जैसे ही सारिपुत्र ने उनको ऑर्डेन किया, वो उसी दिन चले गए और एक सेक्लूडेड हट में, एक कुटिया में रहने लगे। मेडिटेटेड ऑन द वोफुली डिलेड बर्थ, और उन्होंने जो उनकी बर्थ बहुत देर से हुई थी, दुख भरी थी, उसके ऊपर मेडिटेशन करी। एंड सो हिज नॉलेज अटेन्ड मैच्योरिटी, डिसेंडेड इनटू द एवेन्यू ऑफ इनसाइट, casting out all the intoxicants of the mind and thus attaining arhanship. तो इस तरह करते करते उन्होंने arhanship प्राप्त कर ली। Thereupon, experiencing the bliss of the emancipation, he in emotional rapture uttered this salve. तो उन्होंने वो उस जो arhanship थी जो प्राप्त हुई थी, तो उसके bliss में ये वर्ष कहा था। So verse is Teme ijjusum sankappa yaddatho pavisam kutim vidya vimutti pachesam mananus ayyamujjahan. So इसकी translation is my attention is accomplished, the reason I entered the hut. Knowledge in full freedom has ripened. Sleeping tendency of conceit is forsaken. तो यहाँ पर मैंने राइट में ये कुछ रूट्स डाल रखे हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आई थिंक ट्रांसलेशन इज सेल्फ सफिशिएंट। Should we move to the next one? So of course in some senses the story is fantastic, लेकिन मैं सोच रहा था जब हम लोग
तुम्हारा चला दें? एक सेकंड मैं अब I think there are two speakers on, no, आपकी तरफ ये दिक्कत है. अब ठीक है. Yeah, okay. So I'm saying in some senses, yeah, the story is fantastic, वो जो पहले वाली है. But you know, मैं याद कर रहा था, अजय अमरो एक बार अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे. So apparently till he was 2, he just didn't speak at all. And so of course the parents were very worried कि क्या हो गया है. And apparently as he crosses 2, not only does he start speaking, but actually articulating very clearly and being very क्या कहते हैं उसको, being very clear in what he wants, does not want, sort of conversing with adults and so on. So that's one. And then there is the encounter of ये जो श्री M है with his guru, I forget his name now, at 9 years of age. Maheshwar Nath Babaji. Yeah, right. Maheshwar. Okay. M की जगह. अच्छा. तकिया चाहिए आपको? ले लीजिए. या बनते जी. Yeah, okay. So no, all I'm saying is that, yeah, maybe immediate infancy पे हमें समझ नहीं आता है, but you know, there are these instances even in our own lives of people that we ourselves know, which are sort of semi-fantastic. So, you know, so we don't really know. I mean, for me, what's shifting is the elasticity of credulity is really shifting. So that's all. I thought I'd just share that. That's all. In the Indian tradition, we have the story of Shukdev, who was also born after, I think, very, very long conception. I don't remember, I think many years of conception or something. And the moment he was born, he just walked out of the womb. He was already enlightened. I mean, that's the story it says. So there are such stories in various traditions. We don't know really. Yeah. That's what I was also thinking from a ultimate reality point of view. एक तो इस story का content है. Progressively, I'm finding it very helpful to also see that when I hear something like this, how does the mind react to it, you know? And I'm finding it more and more a very helpful exercise कि जैसे मेरा exposure ऐसी चीजों के तरफ होता है जो कि मेरी conditioning के अनुसार, you know, I'm not so sure क्या हो रहा है and so on. Actually, to be setting aside the content, whether he walked, didn't walk, talked, didn't talk, whatever, setting aside that, you know, just to be, just to train to be okay with acceptance or non-acceptance, or in some cases, complete acceptance, total acceptance. I mean, there are some situations, some stories, some people, some traditions, for whatever historical reason, for my mind, you know, they're completely fine. And for other people, exactly the same thing is totally incredulous. So मुझे ये भी अब धीरे-धीरे I'm also using it as a means of my own training to like Ajahn would say that, you know, good is good and bad is also good, you know, so not to get too carried away with the content. So, but sorry, maybe I interrupted you, but I thought just two things I'd just share on this. So we can always suspend our judgments. I mean, that if we have it touches our credibility too much, we can suspend our judgment. Because in this very story, there's a background story that he was there in some ancient Buddha and he did enormous merits and enormous service of the Buddha, and fruit of that, because there's always that karma principle which is operating in these stories. So they have that reasoning for it also in the past. So we can only suspend our judgment and see, yeah, maybe it's possible. And there are stories, जैसे आपने बताया, कई stories हैं ऐसे लोगों की. I know of a person who remembered his past life. He was a small child, and he made life hell for his parents. कि मुझे लेके चलो. Ultimately, they had to take him and acquiesce him, and then his past life
relatives kind of quietened him down, and they were very wise people, and he readjusted to the new life that I have known personally. So, संयोग ऐसा कि उसका नाम भी उन्होंने मृत्युंजय रख दिया था. अजीब ही संयोग था ना. वैसे ये पॉइंट मेरे लिए अक्सर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि हाउ टू सस्पेंड द जजमेंट. Maybe it's right, maybe it's wrong. That's it. लेकिन बच्चे को अगर पास्ट लाइफ का याद है, वो लेके गया है और उन्होंने भी तो देखा होगा ना. तुम जानते हो फिजिक्स के प्रोफेसर थे. जो ये वाला इंसिडेंट है ना सर, इसमें जजमेंट सस्पेंड करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं. क्योंकि आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं. तो जो कि उन्होंने किया, एंड अगर आप वेरीफाई करते हैं तो फिर तो जजमेंट तो यही कहती है कि सही कह रहे हैं. हाँ, बट हाउ डिड इट हैपन? सर वो पिछले जन्म का याद रहता है ना. और वैसे कईयों का ऐसा हो, ये नहीं मृत्युंजय का आप कह रहे हैं, मैंने बड़ों का सुना है कि ठीक है. That's but this story also, is too fantastic. You could say that. Yeah, that's fine. So it doesn't gel with me at the moment. Fine. Maybe it will gel with you. I know there was a person called Arpan and there's a person called Mahapanya. There's enormous difference. I think Deepak will agree with me when we used to go with Deepak on to scouting land in Nagar. How was Arpan's response to the bhajans we used to play, and what is his response now? Total transformation. So it happens with change of time, change in understanding, change in experiences. Some of them are which are totally inexplicable rationally. Then you begin to wonder कि कहीं rationality की कुछ limit है शायद. But मुझे तो बहुत rational लगता है इसमें, क्योंकि transformation of a person along with the different experiences that they go through is definitely possible. We have seen that with so many. The same thing applies to these kind of stories. Transformation can happen in the extent of acceptance of these stories is also a transformation. These fantastic looking stories become acceptable as you have your own personal experiences, which are really irrational in the sense of rationality. But it's a matter of, it's not very crucial. You can just ignore it. But if we keep our mind open, then the possibility of something emerging which can really draw our attention in that direction happens. Especially if you develop strong concentration, then these things become accessible. Some things which are absolutely out of the world will become accessible. तो शायद यही थोड़ा सा वो रहता है कि जब हम ऐसी चीजें स्टोरीज में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि लगता है किसी ने लिख दिया होगा. अक्सर ये चीजें हमें स्टोरीज में ही मिलती हैं. तो फिर मुझे लगता है कि स्टोरी तो मतलब ठीक है, वी हैव द फेथ इन बुद्धा's टीचिंग होगी, उसको भी तो कुछ होगा. नहीं, वो तो उसकी अपनी इमेजिनेशन भी हो सकती है. That's why it was felt that you should select verses and only present them. That's one of the reasons that we should only select those verses which have a reflective content in them. So since you are carrying on to the past, you could even ignore the ones which are immediately selected by you. You're under no obligation to do anything. So we can do, but वो कुछ कह रही हैं मेरे ख्याल से. अमृता कुछ कह रही हैं, कुछ मुझे दिख रहा है उसमें. या अमृता जी नहीं दे रहा अभी. जी नमस्कार सर. या आपने बोला कि कंसंट्रेशन और रैशनैलिटी को थोड़ा प्लास्टिक करने के बीच में एक लिंक है. उसको अगर आप थोड़ा अनपैक कर दें प्लीज. See, if we develop strong concentrations and
Simultaneously, the mind is purified by reflective analytical practices. Then it becomes possible to access experiences which may not be accessible if the concentrations are low. I mean, I want to put it very safely. I don't want to make too much out of it. That much I can say for sure. Okay, I can say for sure that if the concentration is raised sufficiently high and the mind is purer, becomes pure with passage of practice, then it is accessible. Things are accessible which are not visible, for example. Okay, so when you talk of realms of existence and things of that kind, they become accessible. There's no doubt on that issue. So then the things which will not be rational in any way, they won't fall within our rationality at all. But you have that intuitive experience that, oh yeah, that's it. And it's more real than the so-called real world, because it transmutes you, it transforms you. And you can see its link and relationships with events with visible events. You can see the relationship of those things to visible events. So this much is, I think I can say with full confidence. So ज़्यादा कहना चाहिए ठीक ना. Thank you, sir. Thank you so much. So this was a comment. There are incredulous stories that are contemporary involving many Thai Kuba Ajans. So, कुछ select. दो ही select किए थे. So then we can skip the next few ones. This one, 65. Okay, but that's okay, but बच्चा. Okay. हाँ एक विमलकुंड 64 है मेरे 64 हाँ ठीक है सर मेरे को सर हिंदी नंबर्स में थोड़ा कंफ्यूजन आया 64 है ठीक विमलकुंड में थेरागाथा उसको चेंज करते स्टोरी थोड़ी छोटी सी है बट आई थिंक ये वर्स जो है थोड़ा डिस्कशन में Vimala Kondanya. He was reborn in this Buddha age as the son of Ambapali, his father being King Bimbisara. She named the child Vimala, but afterwards he was known as Vimala Kondanya. तो ये बुद्ध के समय में अम्बपाली के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे जो कि बिंबिसार की पुत्री थी. बिंबिसार का पुत्र था अम्बपाली का कोटिसा. Ambapali is the same that dancer. Yeah, she is a courtesan. She has अच्छा. children. His father being King Bimbisara. Child was fathered by Bimbisara. अच्छा. Oh, child was fathered by Bimbisara. She right. Not her father, his father, right. She named the child Vimala. उन्होंने अपने पुत्र का नाम विमल रखा और उसको बाद में विमल कौंडन्या के नाम से बुलाया गया. He was convinced by the Buddha majesty of the exalted one at Vaishali, left the word for the order and attained arhanship. तो उन्होंने उसके बाद प्रवज्ञा ली और उसके बाद arhanship प्राप्त की.
तो सर इसमें ना इस वर्ष के अंदर ये जो आपने क्यों सिलेक्ट की है बताइए। हाँ, तो सर ये जो इसका जो ये पताका है, इस वर्ड का बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। हाँ, तो जबकि वर्स बहुत, इसकी स्टोरी नहीं है बट उसका सो द वर्स गोज एज दुम व्याहम अपन्नो जातो पंड केतुना केतुहा केतुना येव महाकेतुकम पंदयसीति. So a risen of the one named after tree, borne by the pale white banner, by the banner of the banner bearer, the great banner of has been demolished. तो सर एक्चुअली मुझे लगा कि ये काफी इन्होंने ये जो वर्ड है केतु, उसको डिफरेंट तरीके से यूज किया है, तो मैं ये भी चाहता था कि हम थोड़ा सा समझ लें इसको, कि मुझे समझ में ज्यादा आया नहीं था, बट लुक्स लाइक कि उन्होंने केतु को डिफरेंट तरीके से यूज किया है. केतु का शब्द का अर्थ ही झंडा होता है. हाँ, पताका जो है. तो दुम व्यायाय उपन्नो, तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करनी पड़ेगी इस वर्स में. दुम व्यायाय उपन्न मतलब जो उत्पन्न हुए उससे, जातो पंडरनि केतुना, जो कि जिसका नाम के पेड़ के पीछे रखा गया. ये है ना, क्या लिखा है ट्रांसलेशन? हाँ, I arose from the one named after a tree. कौन है? बट हिज मदर इज अम्बपाली ना, हाँ, तो पेड़ के पीछे नाम है ना उसका. तो इसलिए कह रहा है कि मेरी माँ वो थी जिसका नाम पेड़ के नाम पे रखा गया था, because she was also found below a tree. I was born of the one whose banner shines. मतलब जो अपने पिता की बात कर रहे हैं. Banner shines, झंडा. Yeah, it can be interpreted in that manner. It can also be interpreted of a very conceitful person. Banner is actually used for that purpose. Okay. Ketu is used as an indicator of conceit. मुझे याद आता है, इसमें ऋग्वेद में एक ऋचा आती थी, वो स्वामी जी हमें सुनाया करते थे, केतुम पृथ्वी अकेतुवे विश्वमर्या पेत. केतु जो है वो कहते हैं, उसकी ट्रांसलेशन जो कि वो छोड़ देते हैं जो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन है, बट ही यूज्ड टू एक्सप्लेन कि केतु जो है वो झंडा है तुम्हारा, जो द सेंस ऑफ आई जो रखी हुई है, you should you have to demolish it. That's what the verse is saying, but you are doing some havan on that. So that's the meaning of that ketu. Is used in that sense of a conceit, sense of I, aham bhav. केतुहा केतुनायेव महाकेतुम पंदस्सी. Through conceit you remove conceit. तो ये कैसे है सर? कि वो उसकी तरह इस तरह की बातें आती हैं. वो आनंद जो है इस तरह के सवालों में जवाब देता है, वहाँ पे एक दो जगह पे इस तरह की बात आती है कि and I think even Buddha says somewhere something to that effect कि ये जैसे कहा जाता है ना कि देखो वो भिक्षु हैं, साधना कर रहे हैं, अब लोग इसमें challenge your statements, earlier way of understanding, challenge some of the statements of our great teachers. On the basis of conceit, you can remove conceit. How? That आप अभी साधना कर रहे हैं और अभी आप आर्य नहीं हुए, आप देखते हैं कि मेरे साथ साधना करने वाले आर्य हो गया, तो enlightened हो गया, and then he says, no, I should work on it. I should also become it. So you start with that understanding. It's the conceitful understanding, I have to become enlightened. But you have this simultaneous understanding, this is the path to enlightenment. And then you work on it. So starting from conceit, that you have to become enlightened. Your teacher tells you this is how you do, this is how you do, you can drop this, drop this, drop this, and you become enlightened. Like example of Ananda himself. He is told कि सुबह तो ये आनंद हो गया तो आ जाइए, नहीं तो नहीं आना. And he works hard and hard and hard, but he drops it finally. He realizes अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, because he has the feeling कि मैंने इतनों को सिखाया, इतने लोग आनंद हो गए, मैं ही नहीं हो पा रहा. That's the but the whole starting point is conceit. I have to become Arhant. That's it. The starting point of practice is that.
It may be for very valid reasons कि मुझे वहाँ जाना है and all those. That's perfectly fine. But the starting point is that. And as he practices, he then suddenly realizes, yes, जाने दो, बहुत हो गया. And he gives up that last binding of जो उसकी attachment थी उसके साथ, and he becomes enlightened. So that's the idea of here in that the use of the conceit, you ultimately abandon conceit because you realize, oh, this is the last bondage which is operating. So, but ये तो थोड़ा सा फिर भी acceptable है कि क्योंकि ये तनी conceit है कि नहीं है. Of course, yeah. Conceit का मतलब यही है ना कि you start with the idea to, जैसे हम कहते हैं ना. So that is a goal जो हम जिसके प्रति हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं वो. But the starting point तो यही है ना कि मेरे में अभी impurities रह गई हैं, मुझे ये हटानी है ताकि कल सुबह तक ये हो जाए. तो start तो कहीं ना कहीं तो उसमें sense of I तो है ही ना. So you start with that sense of I and then you go. That's the way it is explained that एक जैसे उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक कांटे से दूसरा कांटा चुभा हुआ निकाला जा सकता है. That's the way. That's the example which Ananda gives to one questioner who comes to tell him. Because he says that through desire you overcome desire. These are the words which are given in that sutta. तो Master Ananda, you're gone. कहते क्यों? अरे तुम खुद को उल्टा बोल रहे हो. अभी तुमने कहा desire has to be given up. अभी हम कह रहे through desire has to be given up. He says, yeah, that's what, let me explain to you. And you had the desire to come to see Buddha, and now you have come here. Desire is finished. In a similar manner, you start with a desire to grow in the Dhamma, and you realize that that very desire is ultimately obstructing you, but that desire propels you in the beginning. That's the what Chanda and Tanha operate. Chanda is also required. That's a desire. It is required. That will give you virya, that will give you chitta, that, and then you do vimamsa. That's the importance of vimamsa. You do vimamsa, yaar, oh, मैं इसको इतना पकड़ क्यों रहा हूँ? I have to follow the path and that's enough. And then when you do vimamsa, you realize, oh, that itself is becoming obstructions. Okay. But the starting point was Chanda. Starting point was desire in that sense that I want to do something. That's true of all of us. We started with that idea that we should be free from suffering. That's, and with that, बीच में हमने grasp भी कर लिया, नहीं मुझे ये attain करना है, मुझे वो करना है. फिर समझ में आ गया यार ये grasping छोड़ दो. अब grasping छोड़ दिए तो थोड़ा शांत हो गए कि हाँ ठीक है रास्ते पे चल पड़े तो पहुंच जाएंगे. वो understanding आई. But we started in that manner, zigzag manner, meandering manner we start. So that's the message which is hidden in that. लेकिन जैसे आपने आनंद का ही बताना, उसने औरों को शिकार खुद नहीं लिबरेट हुआ, तो भी जो खुद ही नहीं हुआ तो मतलब खुद क्यों नहीं हुआ? कोई पहले खुद हुआ शो नहीं रहा था, समझो तो सही बात समझो ना. When he was practicing, क्योंकि उसको टाइम दिया गया था भाई को, पीछे देखो तो सही. महाविश्व की ग्रेटनेस देखो ना, रात का टाइम है तेरे को सुबह आ जाना है, तो नहीं आना. And they all want him because he is the person who knows everything. He has studied it. He is remembering everything. They all want it, but there's a rule. And he therefore says, yeah, of course I will do it. मेरे से तो मेरे इतने disciple अनंत हो गए, क्या बात कर रहा है? This, it is like that. No, that's all conceit. Then, by practicing, he prepares the ground and then realizes, अटक क्यों रहा हूँ यार? And then he just gives up and he realizes, okay, let me take rest. And all the preparation he has done till that, it stands him in good stead. And that preparation through. If he has not done that preparation, how would he become automatic? So that's the way it operates, Some of the things, avidya is the last thing to be forsaken. जो अनंत के जो fetters हैं, 5 higher, so-called higher fetters. These are the kind of Rup Rago, Arup Rago, and Asmimana, and then Uddhacha and Avidya. Avidya is the last thing. कहीं ना कहीं ट्रेस रह जाता है, थोड़ा ट्रेस रह जाएगा. यही ट्रेस रह जाएगा कि मुझे बनना है. वो कितना मुश्किल है.
अब पता चलता है ना जब वो देखा कि अनिच्चा संज्ञा का मुख्य बात यह है कि यू शुड नॉट लाइक प्रेज। अरे बाप रे, ये तो ऐसे लगने लग गया कि तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया, कोई आपको प्रेज करे और आपको डर लग जाए उससे। I mean, virtually that's what Buddha is telling you. It's not a simple thing. So that shows the depth to which the avidya can penetrate and where exactly it has to be given. तो जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस करते हैं ना, then things become clear. हाँ यार, हमें बहुत भ्रम हो गया था कि अभी अनिच्चा दुसंज्ञा तो पुष्ट हो गई, खाक हो गई, कुछ नहीं हुई। ये देखो तो सही कहाँ से, क्यों भगवान ने बार वहां पहुंचा दी, हमने तो बार यहाँ रखी हुई थी, उन्होंने बार इतनी ऊंची कर दी कि सब ठीक हो गया सब कुछ। प्लीज होल्ड ऑन, कैरी ऑन. This also is impermanent. You say, keep on saying, fame is impermanent, praise is impermanent, but actually you like it. It's a very powerful teaching. कि अविद्या जो लेटेंट रूप में पड़ी रहती है यार, छूटती नहीं है, ना टेनेशियस होल्ड है उसका. And that's why they say Mara is so powerful. कुछ किसी ना किसी तरह से पकड़ ही लेता है उसे. 10 सोल्जर्स में प्रेज भी तो है, शायद 9वें 8वें नंबर का है प्रेज एंड फेम एंड प्रेज, वो छोड़ता नहीं है. सो द सेंस ऑफ आई हैव बिकम दिस, आई हैव बिकम दैट, मेरी साधना अच्छी हो रही है, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे ये क्लियर है, मुझे वो क्लियर है. दे आर ऑल subtle forms of conceit, but they are the ways by which we will free. सडनली ख्याल आ जाएगा ये किसको क्लियर हो गया, ये तो है ही नहीं कोई, किसको क्लियर हुआ, किसको पकड़ लिया. सो दिस काइंड ऑफ अविद्या, दिस काइंड ऑफ गोइंग बैक एंड फोर्थ होता ही रहता है. So, but कंसीट से कंसीट को निकालना का इस सेंस में कहा जाता है. हाँ, इस सेंस में. इसका कोई और भी क्या एग्जांपल है? ये तो सर बड़ा रेलेवेंट सा है, क्योंकि मेहनत करने के लिए गोल तो बनाना ही पड़ेगा. तो उसमें गोल बनाने के प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं पे थोड़ी अविद्या आई जाती है. So, इसके अलावा कोई है क्या कि एग्जांपल जिसमें लिखा हुआ है कि कंसीट से कंसीट को निकालना है? यही मैंने कहा, उसमें डिजायर से डिजायर को निकालना हो तो सुत्ता है पाता है. अच्छा, that's a proper sutta. I can locate that reference and tell you. So if some person comes to question Buddha ना, तो आनंद पहले उनको हैंडल करता है ना कि इसको भेजना है, तो पूछे तो भगवान शायद ध्यान कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उसने कहा तुम ही बता दो. And then when he explains Buddha's teachings in this manner that you should be free from desire, then he says, but the way to work is in some other sentence, exactly मुझे याद नहीं, he says this. He says, then Bhante, you lost it. He says in like those many words. Why? You just know in the beginning you said desire is a problem, and now you say desire has to be used. Just like reference reading. Then he gives beautiful examples. He gives that very example. He gives. तुम यहाँ आए ना, तुम्हारे मन में desire थी तभी तो आए यहाँ. अब वो खत्म हो गई ना, हाँ खत्म हो गई, बस ऐसे ही होती है खत्म. So I locate that and give some it. सही सूत्र भी पढ़ा था हमने, जिसमें था कि अगर डिजायर आ रही है तो पहले अनहोलसम को पहले होलसम से निकालो, अगर वो भी काम ना करे तो उसको इग्नोर करो, वो भी काम ना करे फिर लास्ट में था कि जीभ को तालू से लगा लो. That is for resentment. No? That is, I mean, that is a firefighting measure. We are talking of removing it from the body, from the root. वो जो है ना firefighting measure है कि जीभ को लगा के उसको क्रश कर दो, क्योंकि अगर आपका गुस्सा अभी किसी का खून करने वाला है तो बहुत जरूरी है कि भैया ये कर ही लो, इससे ना हो कि वो कहीं मैनिफेस्ट हो जाए एक्शन में. So that is in that sense of removing resentment or anger and unwholesome tendencies. Here we are talking of chanda and the kind of strong relationship between chanda and mild tanha which keeps on operating. वो हम distinguish नहीं कर पाते. We start with chanda, but then slowly it becomes mixed, mired with the sense of I. Conceit आने होती, ये तो हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, और कुछ होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए. So they are not going to manifest in unwholesome external actions. कोई शील नहीं टूटने वाला इनसे, बट इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी. उस सेंस में ये
थोड़ा डिफरेंट है। उसमें तो खतरा है कि अनहोलसम टेंडेंसी अगर ज्यादा बढ़ गई तो आप कुछ ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज कर दोगे सिस्टम में कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। That's why there's a need for that kind of an action. सर एक चीज मिस हो गई थी जब आप कह रहे थे कि जब प्रेज मिल रही है तो वी शुड बी अफ्रेड ऑफ इट और वी शुडंट बी। आपने कहा कि तुझसे डर लग रहा है प्रेज से, तो वो क्या कह रहे थे आप उस समय? उसमें डर नहीं कहा था एग्जैक्टली, उसमें वर्ड है प्रतिकूलता का भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डर जो है वो अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। मॉरल फियर ओतप्पा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और अगर आपने कल ही सुना हो, अजान अमरो कह रहे थे, एज यू प्रोग्रेस इन धम्मा योर हीरी एंड ओतप्पा इंक्रीज मोर एंड मोर एंड मोर। तो Arhant has enormous hiri and ottappa, means it's impossible for him to do any immoral action. Of course, for Arhant छोड़ देते हैं, we can see talk about Sotapanna and others. His level of hiri ottappa is phenomenal. डर की वजह से है क्या? It is moral fear of breaking the consequences of breaking shilas. So hiri ottappa are the primary things which we have to develop. तो हमको हमारे मन में ये भाव रहता है ना कि डर जो है वो अनहोलसम है। इट डिपेंड्स ऑन किस तरह का डर है। एंड इन दी सरप्राइजिंगली इन दी फैक्टर्स इन अभिधम्मा फियर इज नॉट देयर। अनहोलसम फैक्टर्स में फियर नहीं है। इट इज हीरी एंड ओतप्पा, अहीरी एंड ओतप्पा। अहीरी इज अनहोलसम फैक्टर, shamelessness, anotappa, recklessness, not being afraid of unwholesome actions. That is a not being afraid of unwholesome action is a unwholesome mental factor. So that is a very great value. You have to understand that very properly. इसलिए वो हमने जो नगर उपमा सुत्ता उसमें ही पढ़ा था, हीरी ओतप्पा are the primary first level protection which we get from external temptations and external aversions. चीजें जो हमको टेम्प्ट करती हैं, चीजें जो हमको मन में द्वेष जगाती हैं, उनके प्रति प्राइमरी प्रोटेक्शन, फर्स्ट लेवल प्रोटेक्शन इज हीरी एंड ओतप्पा। अगर वो वीक है तो फिर वो पेनिट्रेट कर ही जाएंगे, फिर आपको दूसरे लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कितने लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन है हमारे पास। अगर वो कहीं भी पहले पे रुक जाए तो कितना अच्छा हो, फिर दूसरे पे रुक जाए वो भी नहीं रुका, तीसरे पे रुक जाए नहीं रुका, तो फिर देन द एनिमी विल ओवरपावर यू, आपके बम्बार्ड कर देगा आपके महल को, खत्म, यू आर डेमोलिश्ड टोटली। सो मॉरल शेम एंड मॉरल ड्रेड या लज्जा, और हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया था जो पाप भीरु था, दैट वाज द काइंड ऑफ ट्रांसलेशन आई कुड डू। अगर कोई अच्छा वर्ड बता सकते हो तो बता दो भाई। दैट फियर ऑफ डूइंग अनहोलसम एक्शंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होलसम क्वालिटी। अगर वो नहीं है तो बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। एंड सर और प्रेज से रिलेटेड जो हम कह रहे हैं कि प्रेज के प्रति प्रतिकूलता होनी चाहिए, तो प्रतिकूलता आई मीन ज्यादा वो है या फिर हम बस कॉशियस होना चाहिए कि हम कैरिड अवे ना हो, क्योंकि जनरली तो हम कैरिड अवे रहते हैं प्रेज में, तो उसे प्रतिकूलता कहना चाहिए या फिर बस एक कॉशियसनेस रहे? भगवान ने कहा, मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उससे ज्यादा तो वही जवाब दे पाएंगे। But Dharsa, maybe you want to add the caution that is the ultimate measure of paripurnata of anicca. Yeah. And maybe for those of us who are still trying to build wholesome sense of self, and if we receive praise with respect to our effort, etc., then there is a wise way to receive confirmation के मैं जो effort कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है. So maybe you want to also balance that out. You're very right. Thank you. It's very important that we see which teaching is applicable to me at what stage of my practice. It's very important.
So if somebody is saying that you are doing good and you are working fine, you have to accept it in the sense of a good feedback. You know? So seeing a good feedback as a good direction in which to move is pretty fine. But the issue is of developing the depth of understanding to such an extent that you're not becoming slaves of praise. Many of us become slaves of praise. We want approval from others. Now, all that is needed when we have got already built a reasonably good sense of self. Then we are working towards transcending self, because from an unhealthy sense, you have to build a healthy sense. Then from healthy sense, you have to transcend it. So one has to properly evaluate where one I am, and then take appropriate criteria for progress on the path. गड़बड़ हो सकती है बिल्कुल। मनते जी ने जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। So when I say सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है that we don't have a proper evaluation of ourselves. We think we are here while we are there. That's a big problem. Why we think we are here? Because I have studied so many things, I have heard so many things, and I think that I know them. I may know them in here, but they are not here at all. That is a very big caution, that we should have a proper evaluation of where we are. And then appropriate practices should be adopted. जैसा जिस स्थिति में मैं हूँ उसी की प्रैक्टिस में करूँ. अगर मैं प्राइमरी क्लास में हूँ तो मैं प्राइमरी लेवल का ही सुनूं. कोई मुझे संयोग से कुछ सुनने को बात मिल जाए जो मेरी समझ में आ जाए, लेकिन मैं उसका लाभ नहीं ले सकता अभी, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड फाउंडेशन ठीक से नहीं बनी है. फाउंडेशन ठीक से बनेगी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा. तो जो ट्रांसेंडेंट सेंस ऑफ सेल्फ की बात जैसे हो रही है ना, that should come after healthy sense of self is developed. But how to evaluate yourself? Yeah. To which level you are? Yeah, you should have a teacher. If I can't evaluate myself, I have a teacher. I go in to ask him, this is my state, this is what I am doing, and therefore, what should be my practice? Isn't it? So what practice I should do, I should decide in consultation with my teacher. So, and once I am confident, then I'll know what practice I do. So अगर मुझे confidence नहीं है, then I should have a teacher. बहुत ज़रूरी है, absolutely essential. Otherwise, if you follow a stereotype procedure, a kind of mass production, कि यही सबके लिए ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है. हर एक आदमी के लिए अलग अलग टीचिंग, वो कई बार हम कह चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. हर एक टेम्परामेंट के लिए अलग अलग टीचिंग की आवश्यकता है. तो वो जरूरी है कि अगर हम अपने को हमें डाउट है तो वी जेन्युइनली एक्सेप्ट मुझे डाउट है, मुझे मैत्री का अभ्यास करना चाहिए कि मुझे अशुभ भावना करनी चाहिए. टेकिंग टू एग्जांपल्स, दे आर काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट प्रैक्टिसेस. किसको मैत्री का अभ्यास करना चाहिए, किसको अशुभ भावना करनी चाहिए. अगर मुझे डाउट है और मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ तो देयर विल बी कंफ्यूजन. तो हमने तो बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया है मेडिटेशन को कि भाई आप सांस देखो, संवेदना देखो और मैत्री करो. That's not always good. It depends on the people. I mean, as a generic thing, कहना वो ठीक है, but what is suitable for me, it may or may not be. I'm not saying it's not. It may or may not be. It depends on situations. It depends on mindset. अगर किसी का रागात्मक स्वभाव है तो वो मैत्री करके प्रसन्नता से रहेगा, खुश रहेगा, उसको अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है. But he will not be able to withstand the negative forces or aversion tendencies. It will be impossible. तो उसका राग का स्वभाव बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि वो राग मैत्री के नाम पे is generating affection. अगर मैं मैत्री करता हूँ उन लोगों के प्रति जो मेरे प्रिय हैं, तो वो मैत्री में और अफेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं आपस में. पता ही नहीं चलता कि मैं उसमें अपना राग जगा रहा हूँ कि सचमुच में उपेक्षा सहित मैत्री कर रहा हूँ, क्योंकि हर मैत्री के साथ उपेक्षा का होना आवश्यक है.
तो ये बड़ा इसमें सटल प्रॉब्लम हो जाती है। पर मैत्री के साथ कई बार जैसे आप किसी के भी प्रति मैत्री करते हो, अपने बच्चों के प्रति ज्यादा मैत्री करते हो, तो उसमें फिर वो अटैचमेंट की भावना होती है ना, मुझे भी ऐसा लगता है ना। अगर आप नहीं, but मेरी स्टेटमेंट कि हम बच्चों के प्रति ज्यादा करते हैं शोज की नहीं, सबके प्रति करते हैं, पर लेकिन बच्चों का भाव है एक्चुअली मैत्री अगर ज्यादा करनी चाहिए जिसके प्रति हमारा द्वेष। मैत्री का स्वभाव साधना उसको करने के लिए कहा जाता है जिसको किसी के प्रति द्वेष हो। और हम अपने से इसलिए करते हैं कि उसको याद करके तो मैत्री जागेगी ही नहीं, तो शुरू से इसलिए करते हैं अपने प्रति कर लो, अपने प्रिय के प्रति कर लो, बट ऑब्जेक्टिव वो है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं। इनके प्रति तो हमारे मन में वैसे ही शुभकामनाएं हैं, गुडविल है। जिसके प्रति गुडविल नहीं है उसके प्रति करनी है मैत्री, इसलिए मैत्री का अभ्यास महत्वपूर्ण है। और तब हमारा जनरल सबके प्रति मैत्री का भाव हो जाएगा। अगर हमारा जिसके प्रति द्वेष का भाव उसके प्रति मैत्री का अभ्यास कर पाए तो सबके प्रति अपने आप मैत्री हो जाएगी। बट इट विल बी ऑलवेज बी टेम्पर्ड विद उपेक्षा भावना। इसलिए उपेक्षा भावना इज द सुप्रीम प्रैक्टिस। वो नहीं होगी साथ में तो गड़बड़ हो जाएगी, अटैचमेंट आ जाएगी। गुड। So thank you for questions. Any comment Bhante ji would like to say? So we can do आपसे Bhante ji प्रार्थना है, can give some blessings. सो हम सब में वो विजडम जागृत हो जिससे कि ये इतनी रिच और वाइड जो टीचिंग हमें मिलती है उसको हम अप्रोप्रिएटली ग्रहण कर सकें। मे वी बी स्पेयर्ड ऑफ कंफ्यूजन, मे वी हैव may the forces of nature help us to receive that which is appropriate for us and spare us from being caught in a bhul bhulaiya. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghan bhavena sada soti bhavantu. So just before we close, एक बड़ा दिलचस्प भी सवाल आया था, हमने ये शुरू किया उससे पहले कि ये हम ये जो 3 बार बाव करते हैं, अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, उनके साथ हम 3 बार बाव करते हैं, फिर एट द एंड ऑफ इट वी आल्सो बाव 3 more times. सवाल ये था कि ये आखिरी के 3 क्या हैं. So since we have a large number of people here, जिनमें से कई लोग शायद on a regular basis are not familiar with our practices वगैरह, so I thought it might just be helpful for everybody to just informationally know कि ये क्या हो रहा है. So basically in our tradition, Ajahn Chah का जो tradition है, I mean generally in Thailand but particularly emphasized by Ajahn Chah, practice ये है कि अगर आप अगर कहीं भी एक बुद्ध रूप है और आप वहाँ बैठने वाले हैं, then before you settle, you bow down 3 times to the Buddha रूप. And उसकी जो corollary है वो ये है कि जब आप उठने से पहले you similarly bow down 3 times. So in this case, जब session खत्म होता है तो we are basically going to leave the session, get up, you know. So जो आखिरी के 3 bows हैं वो उस तरफ हैं. और and शुरू में also we do, it's often not on camera etc,
बट अगर आप नोटिस करेंगे धम्मराम में जो श्राइन है, जब हम लोग बैठते हैं देन वी ऑलवेज बाउ डाउन 3 times. और इसके बहुत अलग अलग पहलू हैं. अजैन चा ने ज्यादातर इसको एनकरेज किया as a means of re-establishing mindfulness. That's how we would encourage people to see this practice. और हमारी monasteries में तो बुद्ध रूप सभी जगह होते हैं, तो often you may end up bowing 40-50 times a day. Basically, one way to use it is to re-establish mindfulness. Of course, कई लोग जिनका काफी एक भक्ति temperament है, for them it really lifts the mind. और मैं कई मेरे साथियों को जानता हूँ for whom it's a practice in itself, and it's a source of great joy and great inspiration. So just some additional information. भंते जी, इस रिगार्ड में एक क्वेश्चन है. कभी कभी बुद्ध रूप एक पब्लिक प्लेस में होते हैं जैसे, सो हाउ डू वी, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, और दूसरा अगर है और वी आर पासिंग बाय इट, तो व्हाट शुड बी आवर इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पांस? So I'll request Dharsa to answer the issue of appropriateness. My understanding is that, unfortunately, I notice, especially in India, that the Buddha roop has also become like a decoration, item of decoration. That is the problem. Yeah. That is the problem. So, personally, I find it very inspiring myself, and this is a new development of the nature that Dharsa indicated 30 minutes ago. I find it very inspiring for myself. If I encounter that, then I actually do stop and just in the standing posture, make that bow. और मुझे तो अब ये भी भाव आने लगा है, and I've started doing it, that if I cross any particular place of religious worship, for instance, if I'm having a walk and I cross like a mazar or a temple, then actually I do that as well, and I found it extremely uplifting. So I think it's an issue of Shraddha, more or less, Surendra Prasad sir, and I would do it personally. That's not to say that everybody needs to do it. In fact, जो मेरी previous commentary थी अभी, I would add the rider that if somebody is not inclined to bowing, then personally I would say it's perfectly fine. Just don't bow. It's just totally fine. मैं तो ये शेयर कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रथा ये है, क्योंकि वो सवाल आया था, and उस प्रथा के पीछे कम से कम ये 2 पहलू हैं, mindfulness का और श्रद्धा का. So one can, and of course the third pehlu is that if it doesn't gel with you, then I would say it's just totally fine. Thank you. Okay, thank you. Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadimi Vakhato Bhagavata Dhammo Dhammam Vasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Let us slow to Bhante ji 3 times. Pranam. Dutiyamti. Tatiyamti. And that's the last part, which I should actually have also explained, that there is also the pratha that once we've finished bowing to the Buddha roop, we also traditionally bow down to whoever is the senior most monk sitting amongst us. So that's this last part that we do. So in our monastery, similarly, you might have seen जो लोग वहाँ गए हैं या जिन्होंने वीडियो पर देखा है, that whoever is the senior monk then receives
everybody pays respects to him. So I think most of it is how we do it in Thailand. That's my sense. Thank you. Have a nice day. Let's meet at 4.